Dangerous Skies. Zarrar Khuhro. Published November 21, 2022. Dawn Editorial. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. Last week, a camera-equipped fixed-wing propeller drone crashed onto the Orange Line train terminal in Lahore's Thokar Niaz Beg area, causing a fair bit of panic among the authorities, who initially suspected it may have been an attempted act of terrorism, or perhaps a dry run for a future attack. Police traced the drone to a man named Hamid, who claimed to run a business selling and repairing commercial drones in Lahore's Hall Road Market. Hamid claimed that he was test-flying the drone and it crashed because it went out of range, but the police have taken him into custody on the suspicion that he may have been trying to reconnoiter the area through his drone for some less than kosher reasons. A few months back, following a spate of terrorist attacks in various parts of Pakistan, and in particular the deadly attack on Chinese nationals at the gate of Karachi University, the Sindh police banned the use of commercial drones in Karachi's district south out of fear that they could be used by terrorists to stage an attack on government buildings, foreign missions, and other sensitive installations. This fear is not unfounded and, in fact, it only speaks to part of the deadly potential even commercial drones possess when placed in the hands of the imaginative and amoral. The distinction of commercial is important, because when we think of weaponized drones, the mental image that is conjured is inevitably that of the dreaded predators and reapers raining death from the skies, or, more recently, of the Turkish Bayraktars and other loitering munitions. But the use of much smaller, easily purchasable, and modifiable drones for staging attacks has been picking up, with the pioneers of this strategy being the Islamic State group in the Syrian and Iraqi theaters. Here, multi-propeller and small fixed-wing drones were first seen loaded with explosives, essentially like flying IEDs, when they were deployed against Kurdish Peshmerga in 2016 on a limited scale. The following year saw the creation of an actual department within IS dealing exclusively with the development and weaponization of unmanned aircraft. Recently, Mexican drug cartels have been seen using modified commercial drones to drop improvised explosives on their enemies, creating a new dimension to Mexico's bloody cartel wars. Here, the finger is being pointed at the Jalisco New Generation cartel, which has been using drones for such attacks since 2017, converting drones into flying bombs by taping C4 explosives and pellets onto the drones and detonating them remotely. Drones are proving to be the surveillance technology of choice. You don't have to have the resources of a terrorist organization or a criminal cartel to be able to pull this off, as police in the American state of Pennsylvania learned. Plagued by a series of unexplained explosions which peppered homes with shrapnel from nails and pellets in a suburban township, police were at a loss as to how to trace the perpetrator, given there were no footprints or tire tracks which could have pointed to whoever had planted the bombs. Then, a resident's security camera got a glimpse of a drone dropping a homemade bomb, leading to the arrest of a local man named Jason Muzzicato, who was then sentenced to 5 years in jail. The use of drones by criminals is on the rise, with gangs in the U.S. using drones to ferry drugs and weapons into prisons for the use of their incarcerated brethren. Indeed, drones are proving invaluable for smuggling small items across the world, as Chinese authorities discovered in 2018, when they busted a gang using small drones to smuggle about $80 million worth of smartphones from Hong Kong to mainland China. Operating mostly after midnight, the smugglers needed only a few minutes to transport small bags containing 10 iPhones across the border, managing to smuggle up to 15,000 phones in a single night. The same phenomenon has also been seen at the U.S.-Mexico border, with the aforementioned cartels using drones for small drug shipments. Drones are also proving to be the surveillance technology of choice for burglars and robbers, and even voyeurs, and there have been several cases of criminals using drones to surveil apartments and residential areas in order to pick the easiest targets with little to no risk of being identified. Indeed, one criminal network in Australia used drones to monitor port workers,
calling in hoax fire and theft alarms whenever the workers got too close to a container containing contraband. In one particularly imaginative example, an FBI team on a stakeout was swarmed by mini drones, which succeeded in forcing them to give up their position, allowing the targets to get away. Examples abound, and while there are also many positive ways that drones are and can be used, it would be unwise to ignore the potential damage and disruption they can cause, especially in those parts of the world where police technology and capability is shaky to begin with. The writer is a journalist. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. गुज़िश्ता हफ्ते कैमरे से लैस फिक्स्ड विंग प्रोपेलर ड्रोन लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग में ऑरेंज लाइन ट्रेन टर्मिनल पर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके बाद हुक्काम में काफी खौफ और हरास फैल गया था, जिन्हें इब्तिदाई तौर पर शुबा था कि यह दहशतगर्दी की कोशिश हो सकती है, शायद मुस्तकबिल में हमले के लिए ड्राई रन हो सकता है। पुलिस ने ड्रोन का सुराग हामिद नामी शख्स से लगाया, जिसने लाहौर की हाल रोड मार्केट में कमर्शियल ड्रोन्स की फरोख्त और मुरम्मत का कारोबार चलाने का दावा किया था। हामिद ने दावा किया कि वो ड्रोन का तजुर्बा कर रहा था और ये इसलिए गिरकर तबाह हो गया क्योंकि ये रेंज से बाहर हो गया था, लेकिन पुलिस ने इसे इस शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया है कि हो सकता है कि वो अपने ड्रोन के जरिए इलाके को दोबारा महफूज बनाने की कोशिश कर रहा हो। चंद माह कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्द हमलों और ख़ास तौर पर जामिया कराची के गेट पर चीनी शहरियों पर मुहलिक हमले के बाद सिंध पुलिस ने कराची के ज़िला जनूबी में कमर्शियल ड्रोन्स के इस्तेमाल पर इस खौफ से पाबंदी आयद कर दी थी कि उन्हें दहशतगर्द सरकारी इमारतों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर मुल्की मिशन और दीगर हसास तनसीबात। यह खौफ बेबुनियाद नहीं है और हकीकत में ये सिर्फ इस मुहलिक सलाहियत के एक हिस्से की बात करता है जो तिजारती ड्रोन्स के पास भी होता है जब इसे तसव्वुराती और इखलाकी के हाथों में रखा जाता है। तिजारती का फ़र्क अहम है क्योंकि जब हम हथियारों से लैस ड्रोन्स के बारे में सोचते हैं तो ज़हनी तस्वीर जो तैयार की जाती है वो लामहला खौफनाक शिकारियों और रिपर्स की है जो आसमान से मौत की बारिश करते हैं, या हाल ही में तर्क बीर कतरों और दीगर घूमने वाले हथियारों की। लेकिन हमलों के लिए बहुत छोटे, आसानी से काबिल इस्तेमाल और काबिल तरमीम ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें शाम और इराक के थिएटरों में दौलत इस्लामिया का ग्रुप शामिल है। यहाँ मल्टी प्रोपेलर और छोटे फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को पहली बार धमाका खेज मवाद से भरा हुआ देखा गया था, बुनियादी तौर पर उड़ने वाले IED की तरह, जब उन्हें 2016 में महदूद पैमाने पर कुर्द पेशमरगा के खिलाफ तैनात किया गया था। अगले साल दाइश के अंदर एक हकीकी महकमा की तश्कील देखने में आई जो खुसूसी तौर पर बगैर पायलट के तैयारों की तरक्की और असलहे की तैयारी से मुताल्लिक था। हाल ही में मेक्सिकन मुनशियात के कार्टल्स को अपने दुश्मनों पर देसी साख्ता धमाका खेज मवाद गिराने के लिए तरमीम शुदा तिजारती ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, जिससे मेक्सिको की खूनी कार्टेल जंगों की एक नई जिहत पैदा हुई है। यहाँ जालेस को न्यू जनरेशन कार्टेल पर उंगली उठाई जा रही है, जो 2017 से इस तरह के हमलों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन्स पर C4 धमाका खेज मवाद और छुरी टेप करके ड्रोन्स को उड़ने वाले बमों में तब्दील कर रहा है और उन्हें दूर से धमाके से उड़ा रहा है। ड्रोन अपनी पसंद की निगरानी की टेक्नोलॉजी साबित हो रहे हैं। जैसा कि अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया की पुलिस ने सीखा है कि आपके पास किसी दहशतगर्द तंजीम या किसी मुजरमाना गिरोह के वसाइल की जरूरत नहीं है। एक मुजाफाती बस्ती में केलों और छुरों से घरों को छलनी करने वाले गैर वाज़ेह धमाकों के एक सिलसिले से 2-4 पुलिस को नुकसान पहुंचा था कि मुजरिम का सुराग कैसे लगाया जाए, क्योंकि वहां कोई कदमों के निशान या टायर पटरियां नहीं थी जो इस बात की निशानदेही कर सकती थी कि जिसने भी बम लगाए थे। इसके बाद एक रिहायशी के सिक्योरिटी कैमरे को ड्रोन की जानिब से देसी साख्ता बम गिराने की एक झलक मिली, जिसके नतीजे में जेसन मस्कातू नामी एक मकामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसे इसके बाद 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। जराइम पेशा अफराद की जानिब से ड्रोन्स के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है और अमेरिका में गैंग्स अपने कैद भाइयों के इस्तेमाल के लिए मुनशियात और हथियारों को जेलों में ले जाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
दरहकीकत ड्रोन्स दुनिया भर में छोटी छोटी अशिया की स्मगलिंग के लिए अनमोल साबित हो रहे हैं, जैसा कि चीनी हुक्काम ने 2018 में दरियाफ्त किया था जब उन्होंने हांगकांग से मेनलैंड चीन में तकरीबन $80 मिलियन मालियत के स्मार्टफोन्स स्मगल करने के लिए छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। ज्यादातर आधी रात के बाद काम करने वाले स्मगलरों को सरहद पार 10 आईफोन्स पर मुश्तमिल छोटे बैग्स की नकलो हमल के लिए सिर्फ चंद मिनट दरकार थे, जो एक ही रात में 15,000 फोन स्मगल करने का इंतजाम करते थे। यही रुझान अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर भी देखा गया है, जहां मज़कूरा कार्टेल्स मनशियात की छोटी खेपों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स चोरों और डाकुओं और यहां तक के देखने वालों के लिए भी पसंद की निगरानी की टेक्नोलॉजी साबित हो रहे हैं, और मुजरिमों के अपार्टमेंट्स और रिहायशी इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं ताकि आसान तरीन अहदाफ का इंतखाब किया जा सके जिसमें शनाख्त होने का कोई खतरा नहीं है। दरहकीकत ऑस्ट्रेलिया में एक मुजरिमाना नेटवर्क ने बंदरगाह के कारकुनों की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जब भी कारकुन ममनुआ मवाद वाले कंटेनर के बहुत करीब पहुंचते हैं तो धोखाधड़ी से आग और चोरी के अलार्म में कॉल करते हैं। एक खास तौर पर तस्वुराती मिसाल में FBI की एक टीम को स्टिक आउट पर मनी ड्रोन्स ने घेर लिया था, जो उन्हें अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर करने में कामयाब रहा, जिससे अहदाफ को दूर जाने की इजाजत मिली। मिसालें बहुत ज्यादा हैं, और अगरचे बहुत से मुस्बत तरीके भी मौजूद हैं जो ड्रोन हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खास तौर पर दुनिया के उन हिस्सों में मुमकिना नुकसान और रुकावट को नजरअंदाज करना गैर दानिशमंदाना होगा जहां पुलिस टेक्नोलॉजी और सलाहियत शुरू करने के लिए कमजोर है। मजमून निगार सहाफी हैं। Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.